In C programming, scanf is the most one of the commonly used function to take a input from a user. Okay, for taking a input from a user, scanf is used. The scanf function reads the formatted input from standard inputs such as keyboard. Okay, uh, if you want to take a integer value as an input, then percentile d is used. Printf enter an integer, percentile d, then for storing the value in the integer, ampersand mark is used. Okay, ampersand means it is holding the value. Okay, and symbol. Then for display the value, number equals to percentile d, then test int number. Okay. What value you are taken from the screen, that is Critically sure. enter an integer. Your number is 56. बुझेला? अरे जो इंटीजर वैल्यू टा हमें जो वेरिएबल स्टोर करूचे सेइथिरे ही एका से जो एंड सिंबल टा बसुची ना जो भी वेरिएबल हमें लाइक स्टोर करिया को चाहूचे ता आगुरु हमती एंड बसिया नहीं नहीं हाँ जो वेरिएबल तमे डिफाइन करछो से वेरिएबल ले वैल्यू टा को होल्ड करिया पे एंड सिंबल यूज करा बुझेला? आगे बुझेला स्कैनर का काम? आगे Then here I define float number 1, double num2. Okay. Then enter a number. इटा में देखे देइथिले जो डेटा जो प्रिंटफ डेटा स्कैनअप डेटा करके जो करथिला में एटा देखे देइथिले कैरेक्टर इनपुट पे हमें लिखिएगा परसेंटाइल सी.
when a character is entered by the user in the above program, the character itself is not stored. Instead of integer value is stored. So therefore, storing a character value, single character, then percentile C is used. The practical करियो विजुअल स्टूडियो करियो नले ये ऑनलाइन रे कर दबा आरो सुविधा किछि इंस्टॉल करिया दरकार नहीं. Enter a character, suppose G, enter. So you enter G here. Okay. सेटा थिला इंटीजर पे एटा होच कैरेक्टर पे हो Character by now. सपोज कैरेक्टर और इंटीजर एका संगे हम जदी माने प्रोसेस करिया को चाहिबा सेमति कोन गोटे प्रिंटएफ गोटे स्कैनअप रहि परियो ना दीटा करियो पड़ियो माने प्रिंटएफ स्कैनअप सेमति करियो पड़ियो एका संगे दीटा नहीं करियो अब अलग अलग डिफरेंट करियो नले ठी माने जेमति स्टूडेंट्स नेम और स्टूडेंट्स मार्क कॉमा माने दे जदी सॉर्टिंग कराल कॉमा देखिना एम दी देखो enter a integer then float percentile d percentile a ampersand b. You have enter percentile d percentage a and b. परसेंटाइल डी परसेंटाइल एफ मझी रे किछि स्पेस की कॉमा किछि रहिलान स्कैनएफ रे ना आ भी तो किछि रहिबन कॉमा एटा डायरेक्ट इन दी पास हो ए टाइप रो तमे नहीं परियो मल्टीपल वैल्यू यानी गोटे रे भी रहि परियो सेमति First integer 12, then 75.52. So you have entered 12 and 70.5, 5.9994. Okay. See there, the format specifier. If you write int, then format specifier is percentile d. If you write character, format specifier is percentage c, float percentage a, double percentage lf, short int, hd, unsigned percentile u, long int is li, long int is lli, unsigned integer lu,
on just a minute ବୁଝିଲା ଅନସାଇନ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା percentile C ଏଠି percentile C long double ହେଲେ LF ओके ବୁଝିଗଲା କୋଉଟା କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ସେଟା ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟିଜର ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟିଜର ସେଗୁଡା କେମିତି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା କୋଉଟା ବୋଲି ସାଇଜ କୁ ନେଇକି ଲଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନବା ସପୋଜ 100 crores ଏଇ ସବୁ ସେ ଜାଗାରେ ଲଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟିଜର ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ବୁଝିହଉଛି ହୁଁ। then comes to the operators operators is a symbol that the operates on a value of value or a variable okay so on a value or variable you can work so there is a different type of operator we are having okay so assignment operator is what na age equals to 5 the assignment operator assign the value on its right to a variable of it on its left here 5 is assigned to the variable that age is using equals operator so there are other assignment operator too we are using however to keep the thing simple we will learn other assignment operator the assignment operator is a equals to 5 okay ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡବଲ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସେଇଟା କଣ ଥିଲା that is comparison operator ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା okay. Assignment operator is also two types one is simple assignment operator another is complex assignment operator okay how about that it is the core
assignment operator. Complex assignment operator a plus equals to 5. That means a equals to a plus 5. So what are the complex assignment operator is present? Plus equals to, minus equals to, division equals to, then modulo equals to. Okay. So these are the complex assignment. प्लस इक्वल टू 5 माने दिस प्लस दिस A is equals to a plus 5. Okay. बुझेला सिंपल और कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर. Here we are using assignment operator int number 1 comma number 2. Number 1 we are initializing 5, so it is printing you number 1. Then number 2 equals to number 1. So in the number 2 we are storing a number 1 there. Okay. सर एते जिंस जो सब लिखा है सेडा कोन पब्लिक स्टैटिक मेन में सेरा चेंज हो तो भूल रही है. भूल ही जी. जो नंबर 1 इक्वल्स टू 5 लिखा हला सेडा स्कैनएफ रे रहइबनी ना नहीं स्कैनएफ टा केते बेले यूज हो ना जेते बेले तमे इनपुट नव यूजर ठारो जेते बेले स्कैनएफ यूज हो. बुझि परला मतलब यूजर ठारो इनपुट नव जेते बेले स्कैनएफ यूज हो. स्टार्टिंग रे जो क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर सेटी जो include stdio.h Please. Include. अच्छा void में जो माने ब्रैकेट जो रुए void में ओपन ब्रैकेट रहइबनी कौन ब्रैकेट रहला ना आ से जो पैरेंथेसिस टा दिया होची सेटा जोठी रखले भी चलियो माने तळे भी रखले चलियो साइड रे भी रखले चलियो
ହଁ ଖାଲି ଏଇଟା ତଳେ ହିଁ ରହିବ। ଏଇଟା ତମେ ଯୋଉଠି କରିବ। सर स्ट्रिंग ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କୋଉଟା କହୁଥିଲେ? ହୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଥିଲେ? combination of character